चलो तो जब भी हम लोग फिजिकल पेंडुलम की बात करेंगे तो इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो कि ये पॉइंट जो है इसको हम मान लेते हैं ओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पाइवट पॉइंट, यू कैन से पाइवट, पाइवट इट इज। एंड ये एक्सिस से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि ये पॉइंट जो है आपका सेंटर ऑफ मास पोजीशन है इस फिजिकल बॉडी का। So there is distance between pivot and the center of mass is d here I'm considering, and at the center of mass position that force of gravity will be there. This is applied by the earth. So what is the time period of oscillation for this one? I'm not going to for derivation, I'm just writing the formula. It is, so it is 2 pi root under moment of inertia I divided by mgd. So यहाँ पे दो फैक्टर है, जो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, ये कहाँ से होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, of the body here it is this physical pendulum about what it is, about pivoted point, pivoted point. So जहां पे पाइवोट किया हुआ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ पॉइंट जो है, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको कंसीडर करना है। और इसमें डी क्या है, सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट ओ पॉइंट and then center of mass point. So this is the distance between that center of mass and suspension point that you have to learn. So this is the thing you have to keep in mind, and on the basis of that you can find out that what will be the time period of the physical pendulum. इसके example अगर हम लोग देखते हैं, so let's see one example here. Let's suppose I am considering that there is pivot point here it is, and this is the axis of rotation. This is the what vertical direction I have mentioned here, and there is a rod here which is pivot at this point. This rod I am considering, and it is making some angle theta with the vertical direction. Here pivot point we are having O. So let's suppose this point I am considering center of mass point, which is just at which this mg force is acting on this one, and this direction it will be turn out once you release this position. Here it is. So what is the distance here? You can see this center of mass, if this rod is having length of L, here it is. So this d will be, here you can see this is rod is having the mass m, this rod is having mass m and length L. So if this is the scenario, if it is given to you, इस तरह से अगर रड को हैंग कर दिया जाए तो d हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d हो जाएगा L/2, एंड व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट होगा, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी mL²/3. So what you can write about the time period, it will be 2 pi root under I divided by mgd. So this is 2 pi. What is the moment of inertia here we are having? This is mL²/3, ये हो जाएगा, और यहाँ पे mg और d का वैल्यू यहाँ पे L/2 है, L/2। ये सारे के सारे टर्म जो है रूट में है, तो यहाँ से m कट जाएगा और यहाँ से एक L कट जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको, दिस इज 2 पाई एंड देन वी हैव 2L डिवाइडेड बाय 3G। सो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि एक आपको रिंग दिया हुआ है इस तरह का, ये आपका एक सीलिंग पॉइंट है और यहाँ से जो है हिंज करके एक इस तरीके का रिंग है जिसको इस तरीके से वहां पे हिंज किया गया। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देयर इज वन लाइन आई एम कंसीडरिंग हियर, सिमेट्रिक लाइन, एंड दिस ओनली देयर विल बी सम सेंटर मास पॉइंट वेयर इट विल बी, और इसके अबाउट ये फिजिकल पेंडुलम जो है काम कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो पॉइंट है आपका। तो ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें रिंग दिया हुआ है आपको और रिंग का मास जो है वो m दिया हुआ है, मास ऑफ द रिंग इज m, हियर इट इज, and the radius of the ring is capital R, here it is, and it is pivoted at one periphery point which is attached at the ceiling point. Here you can see at this point we are having that attachment. So यहाँ पे अगर हम D की बात करें इस टाइम ऑफ
टाइम पीरियड निकालने के लिए. सो दिस इज 2 पाई रूट अंडर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mg d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास. सो d यहाँ पे जो है आपका r के तरह काम कर जाएगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अगर हम लोग निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, दैट इज mr स्क्वायर. देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाएंगे, क्योंकि पाइवट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. So that means this is about the center of mass, then pi mrs md square factor you have to add it. So here it is 2 mr square. This will be the moment of inertia about the pivot point O. So what will be the time period here? It is t is equal to 2 pi root under I. I is 2 mr square and then divided by mg, then r it is. So here m get cancel out, 1 r get cancel out. So you can write here it is 2 pi root under 2r divided by g. This is the result here, you can see. So this is all about the physical pendulum. From here you can get the idea that how you can find out the physical pendulum, the time period over there, and what will be the moment of inertia of in that case, and what is the d value. Likewise you can calculate. Now we have the damped oscillation, which is and which is important last part of this chapter it is. So this is damped oscillation. I am considering here to be the finishing point, and then we'll start that wave. So it is damped oscillation. So in case of damped oscillation, you have to understand why it is called damped oscillation. So whenever some dissipative force will be there, viscous force, that kind of any dissipative force, like so in case of SHM, then the amplitude of the particle decreases with time in such a way that the finally at t tends to infinity, the amplitude will be 0. So whenever we have amplitude variable case, whenever it is amplitude is getting decreases with respect to time, it is. In case of SHM, it is. So that kind of oscillation, we say damped oscillation. So this is what you can say, you can understand this is the y-axis I'm considering for displacement. और यहाँ पे आप देखिए कि जो x-axis है, इसको हम लोग time axis को डिनोट करते हैं. एंड द डिस्प्लेसमेंट, अगर इस तरह का आपको ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप देखिए कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट. इसके घटने के पीछे का रीजन क्या है? वहां पे कुछ डिसिपैसिव फोर्स होगा इन एसएचएम, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में ये घटते जा रहा है. तो इस तरह से एम्पलीट्यूड का जो ये घटना हो रहा है, ये घटना तो नहीं चाहिए. क्यों नहीं घटना चाहिए? क्योंकि एसएचएम जो अभी तक हमने पढ़ा है, उस एसएचएम में तो एम्पलीट्यूड साइनोसोडल या कोसाइन फंक्शन होने के कारण से कोई एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ही नहीं होता था. एम्पलीट्यूड एक फिक्स्ड वैल्यू होता था. जैसे x इज इक्वल टू अगर लिखते हैं a साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसमें एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होता है. x आपका एम्पलीट्यूड a ही रहेगा. दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फंक्शन. बट हियर यू कैन सी एज टाइम पासेस द एम्पलीट्यूड फैक्टर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो इस केस में ये रिड्यूस होकर के कहाँ चले जाएंगे? ये रिड्यूस होकर के खत्म हो जाएंगे, आगे जाकर के ये जीरो बन जाएंगे. जीरो कहाँ पे जीरो बन जाएंगे? तो ये जीरो बनेंगे इंफिनिटी पे जाकर. तो दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट व्हेन वी हैव द डैम्प्ड ऑसिलेशन, उस केस में एम्पलीट्यूड जो है आपका टाइम डिपेंडेंसी हो जाएगा, और ऐसा होने के पीछे डिक्रीज करते जाएगा. ऐसा होने के पीछे का रीजन है कि वहां पे एक डिसिपैटिव फोर्स लग गया है एसएचएम में, जिसके कारण से एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और फाइनली जीरो हो जाएगा इंफिनिटी टाइम पे. इसी को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा पार्ट है, वो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसको अगर आप लिखेंगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m d2 x by dt स्क्वायर. दिस इज द m into a, देन वी हैव b into v. v यहाँ पे v को हम लोग लिखते हैं dx by dt. दिस इज v, एंड देन वी हैव k into x. दिस फॉर्मेट पे अगर कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट पे है, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्मेट. डैम्प्ड ऑसिलेशन फॉर्मेट दिस इज, सॉरी. और यहाँ पे जो आपका b है, b जो है इसी को हम लोग बोलेंगे, b जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग. कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, कोफिशिएंट ऑफ
डैम्पिंग 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 इट इज। अब इसमें जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहें इस इक्वेशन से, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो रिलेशन आएगा, दैट आपको इसका जो सॉल्यूशन इससे आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा। x इज, this is amplitude as a function of t, and then we have sinusoidal only, but it is omega dash into t plus of phi, where what is the amplitude and what is omega dash, that is only thing you have to keep in mind. That's it. This is only in our syllabus, that much you have to remember. And related with that only, J main and J advanced ask the question, it is, they won't ask you more than that. So the displacement function जब हमने लिख दिया है इसमें, तो इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ इसका ऑसिलेशन जो 80 है वो कैसा होगा, तो दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन हियर। सो दिस 80 जो होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाय 2m इंटू टी। यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट जो है ये आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड है, इनिशियल इनिशियल एम्पलीट्यूड, वहीं से घटना शुरू होगा, घटना घट जाएगी। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कहाँ से घटेगी, जो आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड है वहां से घटना शुरू होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये b by 2m फैक्टर इनटू मल्टीप्लाइड हियर t, you can see here once you put the t as 0, amplitude is a naught, once you put the t as t tends to infinity, this amplitude will be 0 it is. So this is one of the equation from this displacement relation। यहाँ पे 80 आपको लिखने के लिए आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड टाइम के फंक्शन में कैसा लिखा जाएगा बच्चा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपको समझना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का, व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। So what will be the angular frequency of damped oscillation here? This is omega dash and this will be omega naught square minus b by 2m factor. Here also you are having a square and then root it is. Where what is the omega naught? Omega naught is k by m, k by m. So this is your natural frequency, what you can say here it is. This is what the natural frequency it is. So this is the only equation which you need to keep in mind, that what is about the differential equation of damped, or sometimes it is J-man already asked this kind of question, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट आप अगर देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा ही डिफरेंशियल फॉर्म को अगर हम लिखते हैं तो ma हो गया, यहाँ पे bv हो गया और यहाँ पे kx हो गया इज 0। सो ये एक्सलेशन है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन तीनों को इसमें जोड़ा गया है। इस तरह से अगर लिखा जाएगा तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट अगर हम लिखते हैं a को, तो d2x by dt स्क्वायर b, ये वेलोसिटी हो गया dx by dt एंड देन k into x factor here it is. Once you divide here b by m, it will be k by m, here it will be, and this m will get cancelled out. So that also you can write, if you want to take the coefficient of acceleration to be 1 here, so you can divide b by m, then k by m, and then m you can remove from here. That will be also kind of equation that only. So this is the last part of this chapter discussion. Now we have the wave chapter only remain with. So this, in this case also we have one equation to understand. When sometimes it is that sometimes you will be having asked that forced oscillation. So whenever a body is under some force over there, if it is applied force, if the force applied over there, vibration of body is oscillating due to this kind of force, if it is a sinusoidal function, किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो इस तरह के फोर्स लगा रहे हैं जो कि साइनसोइडल फंक्शन है, जिसमें ओमेगा जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और जो इसका एफ नॉट है वो फोर्स का एम्पलीट्यूड है, तो इस तरह का जो ऑसिलेशन होगा इसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये एसएचएम कर रहा है, तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी काइंड ऑफ फोर्स है। फोर्स ऑलरेडी ऑसिलेटरी है, फोर्स ही वेरिएबल है ये। तो जब भी इस तरह का फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पे और वो ऑसिलेशन में आ जाएगा तो उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाएगा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द forced oscillation, you can remember. Only I have written the definition part so that you can remember.
So when the force applied on any body is F is equal to this kind of force, it is F naught sin of omega t. और जिसके फोर्स लगने के कारण से क्या होगा कि वहां पे आपका जो बॉडी है वो ऑसिलेट करने लगेगा, तो उस केस में जो ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन. दैट्स इट. So I hope this chapter I have finished in quick span of time so that you can revise all the things of this oscillation and SHM chapter. In the next video, I will cover about the wave, sound wave it is, and from this chapter you must be solving one advanced kind of question and one genuine question sure for it, and maybe time period related question they can ask you in electrostat and in magnetism, electromagnetism also. So this is very important chapter. You will be having that chapter of in that chapter also, like we have wave optics. In that chapter also you'll be having something to learn from this only. So I hope this is okay. Thank you.